The battle against leprosy in Pakistan began with a makeshift clinic in Karachi in the 1950s. More than 50 years ago, Dr. Ruth Pfau decided to take it forward. Over the years, Dr. Pfau and her team at the Murray Adelaide Leprosy Centre worked tirelessly to track down and treat leprosy cases all over Pakistan. Due to their efforts, leprosy has been controlled in the country, but there are still new cases every year. MALC centres remain vigilant and continue their work of detection and cure. मेरी स्किन पर बहुत बड़े-बड़े रेड निशान हो गए थे, तो जब मैं यहाँ पर आई तो फिर डॉक्टर रुबीना ने, डॉक्टर ज़िया ने सबने मुझे चेक किया तो फिर पता चला कि मुझे लेप्रोसी है। तो जब मुझे लेप्रोसी के बारे में तब भी नहीं पता था कि ये लेप्रोसी क्या है। Elimination period will also be very long because the incubation period for leprosy by itself is up to 40 years. So we have to be around. So our services have to be kept up. There are patients with disabilities. They have to be rehabilitated. We have many of our patients who are today back on their own feet, but we first had A, to cure them, B, to rehabilitate them physically. Pakistan became the first country in the Emro region to have controlled leprosy. After controlling leprosy and even launching on this elimination campaign, we launched the tuberculosis and blindness control programs, and we have also added community development initiatives. Tuberculosis is a major threat to public health in Pakistan. Infection rates are the 6th highest worldwide. TB work was started initially in Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir, where MAC is the major stakeholder providing treatment to the tuberculosis patients in Karachi, few selected areas of Sindh and KPK, but still our major work is concentrated in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. टीबी का मरीज हमारे पास रजिस्टर्ड होता है, फिर उसकी पूरी फैमिली रजिस्टर्ड हम लोग करते हैं। स्पेशली लेप्रोसी का डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सेंटर है ये मीरपुर खास, फुल मेडिकेशन फ्री ऑफ कास्ट, लैब इन्वेस्टिगेशन, और जो आई के पेशेंट हैं उनको इंट्राकुलर लेंस भी दिया जाता है। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव आई ड्रॉप्स जो होते हैं, मेडिकेशन होती है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। One of the dangerous disabilities in leprosy is blindness. So our leprosy technician have a rather thorough knowledge about the anatomy of the eye and what can go wrong. Blindness control program was initiated again in Balochistan. Cataract, which is the most common cause of blindness in our country, is quite rampant in the area, and MLC actually started doing surgical caps. In total, actually MLC has been able to do almost 3,000 cataract surgeries every year. MALC's achievements have grown in all areas of operation. The figures speak for themselves. Over 48,000 leprosy patients treated, 135,000 TB patients diagnosed, and 200,000 eye consultations entirely free of cost. MALC trains its own leprosy and TB technicians in diagnosis, treatment, outreach, and rehabilitation of patients. They spread out in the remote areas of Pakistan to identify, diagnose, treat, and follow up with patients. Sight-threatening eye diseases can be treated if patients have access to health services. MALC partners with the government to provide free eye and tuberculosis treatment in 157 provincial health centres as well as 11 of its own centres. Taking the integration of services as the way forward, it addresses the physical, social and economic needs of patients, providing support to their families. 71 से जो है ना MALC ने आज़ाद कश्मीर में काम शुरू किया था। पहले सिर्फ लेप्रोसी पे काम शुरू किया था और उसके बाद जो है ना वो आस्ता आस्ता जो है ना वो TB पे भी काम शुरू किया हुआ था। हमारे वर्क का जितना भी वो सबसे बड़ा जो रोल है वो MALC का है। टीबी के सस्पेक्टेड केस जो होते हैं वो सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास आते हैं। ये भी बताते हैं कि बच्चा अगर हो तो उसको BCG का टीका जो है ना पैदाइश के फ़ौरन बाद लगवाना है। दवाई हम मुफ्त देते हैं, दवाई को तो पैसे नहीं होते। वो
भुख भी कौन सी लगनी है, बुखार चढ़ना सी ते खांसी जी इतनी जबरदस्त लगनी सी ते मैं बंदा नहीं पहचान सकती। पहला मैं सारा इलाज कराया, नहीं मेरा आराम आया। फिर वो कुड़ी आई सी, उस दस्या समाने जा, उत्थों भी आराम नहीं, उसी भी रमान आया तो दसनी सी ते मैं उत्थे गई हाँ ते फिर मैं अस्पताल सस्परे किते ने ते फिर मैं उत्थों दवाइयां दित्तियां ने ते मैं इस्तेमाल कीतियां, वो फिर मैं अल्लाह शफा दी है उस सोने दा, कोई पाई पैसा नहीं मारे को लेंदा। It has also undertaken rehabilitation of the IDPs affected by natural disasters such as floods and earthquake in recent years. It has grown and diversified its activities through community development such as building houses, digging tube wells, providing cattle, and more recently, offering small loans to women through microfinance schemes. मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में CBR के हवाले से जो मैंने आपको बताया कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के उन बच्चों के लिए अभी हम वर्क करेंगे जो कि माशरे से बिल्कुल समझने कट चुके हैं। In the past, MLC was mainly a health service organization. Now they would like to do some community development as well, and for this they need to have some tools. Mainly we are constructing houses. 5 साल असां हितां केतिरी परेशानी ही ॻोॾ पई तॾहिं बि परेशान थिया, ही कहिड़ी आफ़त आई, हेॾा गंढा अचिया किरिया त जंहिंसां असीं ॿार हुजिया हा न त असां सभु असां मरी वञे हा। नलका ॾिना आहिनि, उहे रखिया आहिनि, उहे अछो पाणी अचे थो, वरी नाज़ीम विझे पाणी साफ़ करे पींदा तो पाण खे बीमारी कोन थींदी। हमें पानी पीने की जो ये सहूलत है, हमारे बच्चे इसके अंदर नहाएंगे, माल मवेशी जो बच गया है हमारे पास रह गया है वो इनसे पानी पिएगा। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फो की ट्रेनिंग का असर है, उसने हमारे ज़मीर को झंझोड़ा है कि हमें इंसानों के लिए जो है ना वो सोचना चाहिए, एक सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। Dr. Pfau remains a beacon of hope for the suffering and a source of inspiration to the team at MALC. A major part of MALC's funding still comes from donors in Germany, but over the years, corporate donors in Pakistan have stepped up to adopt MALC centers. Individual donations, including zakat, also help MALC, but there is a growing need for local donors to make the work sustainable in the years to come. Funds are a key factor in keeping the work going. Help us to continue the journey. Join hands with MALC.